दोस्तों इस वीडियो में हम 10 और रेव प्लस ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फुल साउंड टेस्टिंग बताऊंगा इस स्पीकर की, तो आप वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा और आपको इंडोर और आउटडोर अलग अलग जगह पर इस स्पीकर की साउंड टेस्टिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel if you believe, if you believe.
दोस्तों अंडर 1000 के बजट में ये स्पीकर काफ़ी अच्छा है। बैटरी लाइफ दोस्तों इसमें कंपनी 10 घंटे का क्लेम करती है, लेकिन आपको 8 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से मिल जाती है। और दोस्तों इसमें हमें माइक दिया गया है और दोस्तों इसमें हमें 10 वोट का आउटपुट देखने को मिलता है। दोनों साइडों पर दोस्तों इसमें स्पीकर दिए गए हैं और बीच में रेडिएटर लगाया गया है। दोस्तों साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। JBL सोनी जैसी तो नहीं कहूँगा दोस्तों, लेकिन 1000 के बजट में इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलती है हमें दोस्तों इस स्पीकर के अंदर। तो आप इसे बेझिझक खरीद सकते हैं। फुल वॉल्यूम पर भी दोस्तों साउंड काफ़ी अच्छे से मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं आती है हमें फुल वॉल्यूम पर चलाने पर भी, और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।